आयज ह्या दिसा म्हजें सपन खरें जालें. कोंकणी साहित्याचो म्हालगडो दामोदर भाई मावजोन ज्ञानपीठ पुरस्कार स्विकारल्या उपरांत आपलें मत उक्तायलें. कोंकणी लेखक भाई मावजोंक तांच्या साहित्या खातीर प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार गोंयचे राज्यपाल प्रिस्टिजियस जन पिल्लय हांच्या हस्तुकीं भेटयलो. पितूरची वाघदेवीची मुर्ती तांकां पुरस्कार ह्या रुपान भेटयली. गीतकार गुलजार, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भारतीय ज्ञानपीठाचे अध्यक्ष विजेंदर जैन, ट्रस्टी त्रिशला जैन आनी विनीत जैन ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लीं. राजभवनाच्या दरबार हॉलांत ही कार्यावळ घडोवन हाडली. राज्यपालान भाई मावज्यांक भारताचो चार्ल्स डिकन्स म्हूण उपमा दिली, जाल्यार गुलजारान भाई मावज्या बरोबरच्यो आपल्यो पोरण्यो यादी ताज्यो केल्यो. पळयात कांय देखदिणे खेळ. I'm happy to say, of late, as I roam all over, I realize that people have started looking at Konkani language and literature with a sense of admiration and respect. Thanks to Jnanpith. To take India forward, we now need good highways. Our Minister for National Highways is said to be doing excellent work. We also need another kind of a highway, a literary highway, that will smoothen the fast pace of literature by clearing the hurdles and the blocks in the minds of the people at the dispensation and also our own fraternity of writers, by strengthening the linguistic bridges through translational activities and by creating an atmosphere that will ensure the freedom of expression. I'm extremely happy to participate in this function. For Damodar ji, of course, I tried my level best to study about him. And regarding his contributions to literature also, of course, my limitation, Konkani language is not known to me. Even then, I tried my level best to gather information. And I would like to start where our Mauzo stopped. I am extremely happy to say today that Charles Dickens, he quoted and stated that as a source of inspiration to him. I would like to say Damodar ji is the Indian Charles Dickens, and I'm very happy to see that. अंग्रेजी आती नहीं मुझे, हिंदी उर्दू भी नहीं आता, कुछ मिली जुली ज़बानें जो मेरे वतन की हैं उसे मैं हिंदुस्तानी कह देता हूँ. मुझे लगता है वो मेरी ज़बान, बहुत सी ज़बान हिंदुस्तान की, उसमें एक अहम ज़बान कोंकणी भी है जिसका जिक्र यहाँ शुरू होती है कि आप दामोदर मौजू को कब मिले. आज आपके लिए बहुत बड़े फख्र की बात है. यू आर वेरी, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर यू दामोदर जी, but it's a matter of great pride for all of us. You make us proud with your efforts. And एक शुक्रिया और एक बार में ज्ञानपीठ के समारोह से लोग उनके बहुत अच्छा किया जो आपने ये अवार्ड इनको गोवा में आकर दिया और इन्हें अवार्ड तक नहीं जाना पड़ा. वही ठीक था कि बजाय दामोदर मौजो जाते अवार्ड के अवार्ड के पास आया यहाँ पर.